Now we start the question number 11. We have already done in the previous lecture question number 10, chapter arithmetical series, arithmetical progression, chapter number 5, exercise 5.2, question number 10 we have already done. Now we proceed for the question number 11 in this tutorial. So we just start solution. In this question says which term, कौन सा टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी गई है ये 3, 15, 27, 39, which टर्म, कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी होगा 132 मोर, 132 ज्यादा होगा देन इट्स, कंपेरिजन में इट्स 54th टर्म, जो इसका खुद का जो 54th टर्म है उससे 132 ज्यादा होगा. अगर मान लेते हैं इसका 54th टर्म x है तो जो उसका कौन सा टर्म ऐसा है जो x प्लस 132 होगा. अगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं अगर 54th टर्म इसका 100 है तो दूसरा जो 100 प्लस 132 इक्वल टू 232 कौन सा टर्म होगा इसी का, तो दैट इज द नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा. वो कौन सा टर्म है, किस पोजीशन पे, किस टर्म पे, किस नंबर ऑफ टर्म पे वो अवेलेबल होगा जो कि 54th टर्म के से 132 ज्यादा है. सो given series, given AP 35, okay, first term A is equal to 3, common B is equal to Tn minus 1 is equal to T3 minus T2 is equal to T3 is equal to 27 minus 15 to 12. So we can also say that here is D is equal to 12. Okay, so we find out the, first of all we find out the 54th term of the AP, because if we find out the 54th term then we add in 54th term 132, then we will get the, suppose the nth term. Okay, that will be the, okay, so as we know Tn is equal to A plus n minus 1 into D. By FOIMU formula, where Tn is the value of nth term. Okay, so T54 मैं जस्ट शॉर्ट में करता हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. A इक्वल टू 3 प्लस n इक्वल टू 54, डायरेक्ट में लिख दो 54 माइनस 1 इक्वल टू 53 into D इक्वल टू 12. Okay, so we just 3 plus 12 3 is 36, carry 1, and 12 5 is 60 plus 3 is equal to 63. It will be the T54 is equal to 639. Okay, so let the nth term of given AP will be greater
will be more than its 54th term will be 130. Let nth term of the given AP will be 132 more than its 54th term. So from question, T54 plus 132 is equal to Tn. Let the nth term Tn. Okay, and we know that Tn is equal to, we can also write in this types, वैसे भी लिख सकते हैं इसको पहले ऐसे रहने देते हैं, फिर उसको नीचे लिखते हैं Tn is equal to T54 value is 639 plus 132. Okay, and Tn is equal to A plus n minus 1 into D. We know that also. So 639 plus 132 is equal to 9 plus 2 is equal to 1, and 336 is 7, and 671. This will be the 671, and put the value A is equal to 3. So 3 plus n minus 1 into D. D is equal to 12. Put the value is equal to 671. Okay, so n minus 1 12 n minus 1 is equal to क्या कर रहा है 671 minus 3. Okay, is equal to 668. So n minus 1 is equal to 668 divided by 12. And we do okay, sorry for that, here will be the 7. Okay, this will be the 7. Sorry, here if you calculate this one, this will be the 771. 6 to 3 if you deduct, if you do 12 5s are 60, 12 6 is 72, 70 remaining 4, that is the 48. 12 4 is 48. So this will be the 12 6s and 12 4s. Okay, so n is equal to 64 plus 1 is equal to 65. Hence the 65th term of given AP will be more than 132 than its 54th term. Thank you so much for watching our video. If you have any issue, please कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो, अगर इंग्लिश में मेरे बोलने में तकलीफ हो या जो है हिंदी में मुझे बोलना है, कुछ भी कहीं पर भी आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको आपको सॉल्व कर दे सकूं। अगले क्वेश्चन में, अगले ट्यूटोरियल में उसको अच्छे से आपको बेहतर से बता सकूं। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज इसलिए समझा देता हूं
क्योंकि अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को समझ गए कि वर्ड प्रॉब्लम में कह क्या रहा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू नो एवरी फार्मूला। 3-4 फार्मूले ही चल रहे करके मुश्किल से। एक है डी निकालने का, टी एन माइनस टी एन माइनस वन होता है, या T3 जो भी है, बड़े टर्म से छोटे टर्म को घटाने पर टी निकल जाता है। दूसरा एक फार्मूला अपने पास चलता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इन टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी थर्ड फार्मूला आएगा बट उसका भी नहीं आया है। तो दो ही फार्मूले, दो फार्म अगर आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में क्या करा तो यू कैन इजिली डू। तो मैं एक बार फिर से भेज देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। विच टर्म, कौन सा टर्म ऑफ द का एपी का, जो दी गई एपी है इसका कौन सा टर्म विल बी ज्यादा होगा 132 132 मोर ज्यादा होगा देन, इसके कंपैरिजन में किस, इसके इसके 54th टर्म, इसके 54th 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। यानी जो सीरीज दी गई इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो उसके 54 टर्म में अगर 132 जोड़े तो जा करके होगा करके, वो कौन सा टर्म, विच टर्म होगा जिसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो वही हमने किया है करके। यहाँ पर हमने T54 निकाल लिया, जबकि यहाँ पर हमने कह दिया करके कि टी एन है गिवन, मान लेते हैं कि वो nth टर्म है, तो टी एन किसके बराबर हो जाएगा, T54 प्लस 132 के बराबर हो जाएगा। तो हमने टी एन की वैल्यू रख दी। टी एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं करके, यहाँ पर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी हम जानते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 3 थी और डी की वैल्यू हमारे पास 12 थी, तो एन माइनस वन डी कर दिया और इसको 70 जोड़ा तो हमने 771 आ गया करके। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर आ गया 65th टर्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं इस पर जो भी है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर बता सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।